Hello students, how are you? I am Vivek Panchal. In last lecture, we learned about types of matrix. Now in this lecture, we will do exercise 1.3 which basis on types of matrix, order of matrix. Okay. First example, matrix A 2, 5, 19, minus 7, 35, minus 2, 5 by 2, 12, root 3, 1, minus 5 and 70. So write the order of the matrix. First off, we will count how many rows here. 1, 2, 3. How many columns? 1, 2, 3, 4. 4 columns are here. That means 3 rows and 4 column. So this is the 3 by 4 matrix. The order of this matrix is 3 by 4. This is simple. Second example, in the numbers of elements. Same matrix is same, but the number of elements. The order of the matrix 3 by 4. The number of the elements are also 3 multiplied by 4 is equal to 12. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 elements are there. Okay. Next example. Write the element. Write the element A13, A21, A24 and A23. A13, the first row, third column. यानी first row, third column, 19. This is a A13. A21, second column, first row, यानी कि 35. यहाँ पे लिखा है. A33, third row, third column, -5. A24, second row, fourth column, 12. A23, second row, third column, 5 by 2. Okay. Next example. If a matrix has 24 elements, if the matrix has 24 elements, what are the possible orders it can have, and what if it has 13 elements? 24 elements होंगे तो orders कौन से होंगे? First 1 by 24, second 24 by 1, third 2 by 12, 12 by 2, 3 by 8, 8 by 3, 4 by 6, 6 by 4. Get it? It's a possible orders of the matrix if the matrix has 24 elements. Same, if the matrix has 13 elements, then only two possibility, 13 by 1 and 1 by 13. Get it? Third number, if matrix has 18 elements, what are the possible orders it can have, and what if it has 5 elements? First 18 elements, then 1 by 18 first order, second 18 by 1, third 9 by 2, fourth 2 by 9, third 3 by 6 and 6 by 3. Get it? This is answer of your first statement. Now answer of your second statement. 5 by 1 and 1 by 5. Get it?
Next example. Construct a 2 by 2 matrix. Construct a 2 by 2 matrix where Aij यानी कि general elements Aij whose elements are given. Aij is equal to I plus z होल स्क्वायर. यहाँ पे I और J की वैल्यू रखनी है और हमें 2 by 2 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है. ठीक है. फर्स्ट I is equal to 1, J is equal to 1, then A1 1 यानी कि 1 plus 1 whole square by 2, the 2 square is equal to 4 by 2 is equal to 2. तो first element 2. I is equal A12, I is equal to 1, J is equal to 2, 1 plus 2 whole square 3 square by 2 यानी कि 9 by 2. Okay. Third, I2 and J is equal to 1. 2 plus 1 9 is equal to 3 square is equal to 9 by 2. This is also 9 by 2. I is equal to 2, J is equal to 2. A2 2 plus 2 whole square यानी कि 4 whole square by 2 यानी कि 60 by 2 is equal to 8. Then your elements 2 9 by 2 9 by 2 और 8. A11 2, A12 9 by 2, A21 9 by 2 और A22 8 यानी कि 2 by 2 मैट्रिक्स हो गए. यहाँ पे अगर आपको 2 by 3 दिए होते तो मैं उस हिसाब से लिखना पड़ता. ओके स्टूडेंट्स, गेट इट व्हाट आई वांट टू से एक्चुअली. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल. कंस्ट्रक्ट अ 2 by 2 मैट्रिक्स A whose general element Aij are given by I upon Z. ये यहाँ पे दिया हुआ है I upon Z. यहाँ पे हमें 2 by 2 मैट्रिक्स यानी 2 रोज एंड 2 कॉलम यानी A12 A11 A12 A21 A22 इतना फाइंड करना है. I is equal to 1, Z is equal to 1, A11 is equal to 1 by 1 upon 1 is equal to 1. Second, I is equal to 1, J is equal to 2, A12, then 1 upon 2, 1 by 2, 1, here 2 and 2 by 2 is equal to 1. Then your matrix is 1, 1 by 2, 2 and 1. Get it? Next. Construct a 2 by 2 matrix. General elements A is there. I plus 2j whole square upon 2. I plus 2j whole square upon 2. That is your general elements. Next. यहाँ पे I is equal to 1, J is equal to 1, I is equal to 1, J is equal to 1, A11 is equal to A11 is equal to 1 plus 2 whole square by 2 is equal to 9 by 2. I is equal to 1, J is equal to 2. A12 1 plus 4 1 plus 4 5 whole square is equal to 25 by 2. Second 2 plus 2 2 plus 2 कैसे है? I is equal to 2 2 plus 2 into 1 upon 2 यानी कि 2 plus 2 का होल स्क्वायर बाय 2 यानी कि 16 by 2 यानी कि 8. ओके. सेम ईयर I is equal to J is equal to 2 A22 यानी कि ये 18. Now your matrix is 9 by 2 25 by 2 8 और 18. Get it? Now next example. Next.
Next example. Construct a 3 by 4 matrix whose elements are given. General elements 1 by 2, 3i plus j. i की वैल्यू क्या रखनी है, j की वैल्यू क्या रखनी है, हमें पता ही है. जो एलिमेंट्स है 3 by 4 दिया है, यानी कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 3 एंड कॉलम इज इक्वल टू 4. ठीक है, तो A12, A11, A12, A13 and A14. Simultaneously A21, A22, A23 and A24, A31, A32, A33 and A34. सारी वैल्यूज़ के अंदर हम रखेंगे. Your answer you will get your answer here. 1 by 2, 0, 1 by 2, 5 by 2. We will arrange it in this matrix. We will find our 3 by 4 matrix. We are in 12th standard, so the simplification of this equation is very easy. Get it? Next example, same. Construct 3 by 4 matrix. General elements 2i minus j. नेक्स्ट लास्ट जो एग्जांपल था उसके अकॉर्डिंग ये आंसर आएगा. कंस्ट्रक्ट 3 by 3 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय 2i minus 3j. यहाँ पे डायरेक्ट आंसर दिया है. आप देख सकते हो कि लास्ट जो हमने किया है इसमें से एज इट इज़ क्या लिखना है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. ठीक है, वैल्यू i इज इक्वल टू 1, j इज इक्वल टू 1, i इज इक्वल टू 1, j इज इक्वल टू 2, i इज इक्वल टू 1, j इज इक्वल टू 3. सारी वैल्यू हम रखेंगे, उसके बाद ये आंसर आपको मिल जाएगा. ठीक है. Construct a 3 by 4 matrix where general elements a is there, elements are given. 3i minus 2j where I is not equal to j, और 0 where I is equal to j. तो यहाँ पे जहाँ पे I और j सेम होगा वहाँ पे क्या लेना है, 0 लेना है, और वहाँ 3i minus 2j में रखेंगे तो I is not equal to j. First element A11 where I is equal to j, then we will put A11 is equal to 0. Same A22 is equal to 0 and A33 is equal to 0. You can find here the 3 elements 0. Now A12, 3 multiplied by 1, 3 minus 4 यानी कि -1. Get it? सारी वैल्यू i और j की इसके अंदर इस इक्वेशन के अंदर हम रखेंगे and we will got here this matrix. Next example, construct a 3 by 2 matrix where a general elements whose elements are given. A is a I minus j where I less than j, I plus j where I is equal to j, and I multiply by j where I greater than j. 3 by 2 matrix मतलब number of rows 3, column 2, that is 3 by 2 matrix. First I minus j, A11, A12, A21, A22, A31, A33, A32. Okay, A11 and I plus j, 1 plus 1 is equal to 2. A21 यानी कि I is greater than j. Okay, I is greater than
जे नहीं, 2 multiplied by 1 is equal to 2. A31 same I is much greater than j, then 3 multiplied by 1 is equal to 3, then 2 2 3. Get it? A12 j is greater than I, that is I minus j, यानी कि 1 minus 2 is equal to minus 1. A22 I is equal to j, 2 plus 2 is equal to 4, and A23 and j is less than I, j is greater than I, that means 2 multiplied by 3 is equal to 6. 1 4 minus 1 4 6. Get it? Next example. Obtain M cross N matrix where A is equal to general element Aiz such that Aiz is equal to 2i minus j, where M is equal to 2 and N is equal to 4. जनरल एलिमेंट्स दिए 2ij, M is equal to 2, यानी कि ऑर्डर क्या हुआ मैट्रिक्स का? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ माई मैट्रिक्स? 2/4. गेट इट? नंबर ऑफ रोज 2, कॉलम 1 2 3 4, यानी कि एलिमेंट्स आर A12 A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24. First I is equal to 1, j is equal to 1, then 2 minus 1 is equal to 1, I is equal to 1, j is equal to 2, 2 multiplied by 1, 2 minus 2 is equal to 0 0, such that we will find the what these matrix. This matrix is a 2/4 matrix. Next example. What is the order of the matrix? And write the elements A12 A21 A24 A31 A34 of a matrix A. Order of the matrix, we know that the number of rows multiplied by number of columns. Number of rows 1 2 3, columns 1 2 3 4, then the order of the matrix is 3/4. The elements find करने the A12 number of rows, first row second column, first row second column, the A12 1, A21 second row first column 2, A24 second row fourth column minus 15, A31 third row first column then with 3, and A34 first third row fourth column minus 6. Then this is the elements of the matrix and the order of this matrix. Next example. Find the values of x, y, z from the following equation. x, y, z की वैल्यू फाइंड करनी है तो इक्वल मैट्रिक्स होंगे. क्या होंगे? इक्वल मैट्रिक्स होंगे. तो अब हम फाइंड कर सकेंगे यहाँ पे 4 3 x5 is equal to y1 z5. x की जगह पे यहाँ पे क्या है? 1, then x is equal to 1. y की जगह पे क्या है? y is equal to 4 and z is equal to 3. ठीक है? Equality of two matrix equating the corresponding elements. So we get x is equal to 1, y is equal to 4 and z is equal to 3. Okay? Find the values of x, y and z from the following equation. Here we will get x plus y is equal to 6. X plus y is equal to 6. 5 plus z is equal to 5. And xy is equal to 8. xy is equal to 8, where y is equal to 8 by x. Then we will put the value of y. We will put the value of y in this equation. x plus y की वैल्यू हमने x plus y is equal to 6 के अंदर y की वैल्यू पुट करी 8 by x. Then x square plus 8x, x square minus 6x plus 8. कैसे? x यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आएगा, x यहाँ
एलसीएम लिया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर 8 एज इट इज़ 6 से मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 4 और एक्स इज इक्वल टू 2। एक्स की वैल्यू हमें सेम दिस एक्स की वैल्यू एक्स इज इक्वल टू 4, देन वाई इज इक्वल टू 8/4 इज इक्वल टू 2 एंड एक्स इज इक्वल टू 2, देन वाई इज इक्वल टू 8/2 इज इक्वल टू 4, देन एक्स की वैल्यू एक्स इज इक्वल टू 4, देन वाई इज इक्वल टू 2 एंड जेड इज इक्वल टू 0। 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, जेड उस तरफ चला 5 इस तरफ चला जाएगा, 5 माइनस 5 जेड इज इक्वल टू 0। और एक्स की वैल्यू हम 2 लेते हैं तो वाई इज इक्वल टू 4 एंड जेड इज इक्वल टू 0। सिंपल। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। एक्स प्लस वाई इज इक्वल प्लस जेड इज इक्वल टू 9, एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 5 एंड वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 है, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन उसको लिखेंगे, सेकंड x प्लस जेड इज इक्वल टू 5 एंड थर्ड y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। हम यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन हम माइनस करते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 अपॉन x प्लस जेड इज इक्वल टू 5 माइनस माइनस माइनस, then y is equal to y plus 5 is equal to 9, then y is equal to 4. Get it? Same 1 minus 3 y is equal to 4, वैल्यू इसके अंदर हम रख देंगे, y plus z is equal to 7. In this equation x plus y is equal plus z is equal to 9, 1 minus 3, the x plus y plus z is equal to 9 and y plus z is equal to 7, minus 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 cancel, 2 x is equal to 2, then y की वैल्यू मिल जाएगी 4, x is equal to 2. Now taking x is equal to 2 and y is equal to 4, the x plus y plus z is equal to 9, 2 plus 4 plus z is equal to 9, the z is equal to 3. Then we will get the value of x is equal to 2, y is equal to 4 and z is equal to 3. Next example, find the value of a, b, c and d from the equation a minus b, 2a plus c, 2a minus b, 3c plus d, -1, 0, 5 and 30. फर्स्ट कंपैरिजन कर लेंगे यहाँ पे, a माइनस बी माइनस 1, 2a प्लस सी 5, 2a माइनस बी 0 एंड 3c प्लस a इज इक्वल टू 3c प्लस d इज इक्वल टू 13, 1 2 3 4. इक्वेशन सेकंड, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, माइनस बी इस तरफ आ जाएगा तो b इज इक्वल टू 2a. इन फर्स्ट इक्वेशन a माइनस बी इज इक्वल टू -1, b की वैल्यू 2 रखें तो a माइनस 2a इज इक्वल टू -1, तो a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 2. इन थर्ड इक्वेशन 2a प्लस c इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 1 है ही हमारे पास, एंड c इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3. एंड फोर्थ इक्वेशन 3c प्लस d, तो c की वैल्यू 3 है तो 13 minus 9, 3 3s are 9, 13 minus 9 is equal to 4. Then the value of a, b, c, d, 1 2 3 and 4. Get it? Next example, this is the MCQs. MCQs do it yourself. MCQ आपको अपने खुद से करने हैं, do it yourself. Okay students, next MCQs ये, find the value of x, y, z from the equations, find the values of x, y, z, find the value of a, b, c, d, find the value of b, c, d and x, y, z. Now this is the example which you have to do it yourself. Okay students, in next lecture we will learn about
next topic in this matrix. Okay students, goodbye.